गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन सेट की है कि मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है, ये हम टॉपिक देखते हैं। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आपको अपनी क्वालिटी को अच्छा रखना है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक रखना है, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो सेफ़ हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों। खासकर इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फार्मास्यूटिकल, फूड, बेवरेज, कॉस्मेटिक्स, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हो जो कि किसी एरर की वजह से, कंटेमिनेशन की वजह से हो सकते हैं, और आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इंडिया में ये जीएमपी गाइडलाइंस 2018 में जो है रिवाइज़ की गई थी भी रिसेंटली, ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पर उनको लाया जा सके। और अभी क्या हुआ था, उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि बहुत सी जो है डेथ वगैरह रिपोर्ट की गई थी कई कंट्रीज़ में इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट द्वारा, जिसमें कि कहा गया था कि कंटेमिनेटेड ड्रग्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया द्वारा। तो अब जो है आपको पता है, इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव है, वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है, जो है प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम, और बाय वैल्यू 14th नंबर पर है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है ग्लोबली, और इंडिया लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है। लगभग 60% जो वर्ल्ड की वैक्सीन हैं वो इंडिया से ही आती हैं। तो इंडिया में जो है एफडीआई भी हमने अलाउ किया हुआ है, 100% एफडीआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिक राउट से, अगर ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई बनाना चाहता है तो। और अगर कोई ब्राउन फील्ड बनाना चाहता है, मतलब एग्जिस्टिंग को ही जो है टेक ओवर करना चाहता है, तो उसमें 74% तो ऑटोमेटिक अलाउड है, बाकी 26% जो बचता है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से भी जो है वो किया जा सकता है। इंडिया जो है वो लगभग 50% अफ्रीका को जेनरिक मेडिसिन देता है, 40% जो है जेनरिक डिमांड यूएस की इंडिया ही जो है वो मेट करता है, और यूके की भी 25% जो है ऑल मेडिसिन डिमांड्स इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री ही पूरी करती है। इंडियन गवर्नमेंट भी जो है पीएलआई स्कीम के बेनिफिट जो है फार्मा इंडस्ट्री को दे रही है। तो अब इंडिया ने गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपकी 250 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आपके पास 6 महीने का टाइम है, आपको ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइज हो तो आपके पास 1 साल का टाइम है, ठीक है। अब इसमें क्यों है, कहा गया है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाओ, आपको ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड करेगा कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या चेक्स आपने जो है वो किए हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। और उससे स्टेबिलिटी स्टडीज़ भी की जाएंगी कि जो है कि हर क्लाइमेट कंडीशन पे उस दवाई का या उस फार्मा या उस मेडिसिन का कैसा जो है वो इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो एक जैसे स्टेबिलिटी चैम्बर में ड्रग्स को रखा जाएगा, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जाएगा, और देखा जाएगा कि क्या जो है उस ड्रग का जो है इम्पैक्ट होता है, उस ड्रग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर का या ह्यूमिडिटी का। कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं मेडिसिन, उनको तो ऑलरेडी ही WHO जीएमपी सर्टिफाइड होना पड़ता है, लेकिन अब जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी बनाएंगी कंपनीज़, फार्मा इंडस्ट्री, उनको भी जो है परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस यही है कि करंटली 2000 के आसपास जो हैं 10,500 में से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हमारी ग्लोबल WHO जीएमपी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही हैं। लेकिन अब जो है सबको करना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड एक इंस्पेक्शन की गई थी 162 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, और उसमें से 14 टेस्टिंग लैब्स जो है वो उसमें बहुत डेफिशिएंसीज पाई गई थी। एब्सेंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल देखा गया था कि वहाँ पर तो टेस्ट रॉ मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कुछ जो है वो उनके पास मटेरियल ही नहीं था। फिर 11 स्पेसिफिक चेंजेस जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे ऑन द ग्राउंड उनको सजेस्ट किए गए थे। अब हम देखते हैं कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो है, हमारी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि अभी आपको याद होगा गाम्बिया में और उज़्बेकिस्तान में जो है डजन्स ऑफ चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड कफ सिरप जो कि इंडिया मेड थे, ठीक है। तो इससे जो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ रहा है, इसलिए इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को थोड़ा रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोवरन क्रेडिट रेटिंग। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिसेंटली यूएस की सोवरन क्रेडिट रेटिंग जो है डाउनग्रेड की है। वहाँ पर जो है डेट बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है, और उनकी इकोनॉमी जो है वो एक रिसेशन के मोड में जा रही है, इसलिए ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग उनकी डाउनग्रेड की गई है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है आपकी जो है, अगर आप कंट्री के हिसाब से देखोगे तो कंट्री में सोवरेन क्रेडिट रेटिंग मतलब कंट्री की क्रेडिट रेटिंग, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग मतलब आप बोरोअर हो, तो आपका जैसे क्रेडिट जो है स्कोर होता है, वैसे ही आप इसको क्रेडिट रेटिंग मान सकते हो।
तो इसमें असेसमेंट की जाती है कि क्या ये पर्सन जिसको आप लोन दे रहे हो ये पैसा चुका भी सकता है या नहीं चुका सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो उस कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है क्रेडिट वर्दिनेस की, कि जो भी खासकर गवर्नमेंट जो है आपको पता है ह्यूज फंड्स बोरो करती हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो का यूज़ करते हुए। तो इन्वेस्टर्स को एक तरह से पता लग जाता है कि क्या ये गवर्नमेंट दे भी पाएगी पैसा या नहीं, ये क्रेडिट रेटिंग से ही पता लगता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज़, फिच रेटिंग्स, ये सब जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट रेटिंग? क्योंकि एक कंट्री जो कि फंडिंग लेना चाहती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से, उसके लिए एक गुड क्रेडिट रेटिंग होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो एफडीआई जो है अट्रैक्ट कर सके। और कंट्री की बोरिंग कॉस्ट भी जो है वो उसी से ही जो है पता लगती है। अब सोचो, किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग अगर बहुत ही ख़राब है तो उसको कोई भी जो है पैसा नहीं लैंड करेगा ना। तो उसको बहुत, जो उस कंट्री को अगर पैसा लेना है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो फिर सारे आपको पैसा देने को तैयार होंगे। जब सारे पैसा देने को तैयार होंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपके बोरिंग कॉस्ट पे इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मासी पोर्टल। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने राज्यसभा को बताया है मासी पोर्टल के बारे में। तो ये इस पोर्टल का नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। और ये बनाई किस लिए गई है? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये एक यूनिफाइड इंस्पेक्शन दे रही है ये ऐप, कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हों, चाहे स्टेट इंस्पेक्शन कमेटीज़ हों, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज़ हों, ये सब मिलकर इस ऐप के थ्रू जो है इंस्पेक्शन कर सकें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की। एक बेसिकली सिंगल प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जितने भी कंट्री में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंस्पेक्शन इसी के थ्रू की जा सकती है। तो ये ऐप बनाई किसने? एनसीपीसीआर ने, आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये काम करती है और ये देखती है कि जितने भी लॉज और पॉलिसीज़ कंट्री में बन रही हैं क्या वो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को जो है मद्देनज़र रख के बनाई जा रही हैं या नहीं बनाई जा रही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो लॉ इसका 2005 का है जिसके अंदर इसको बनाया गया है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ये आपके पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो है प्रोविजंस को भी देखती है कि सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष वीज़ा। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन नेशनल्स के लिए, जिसका यूज़ करते हुए वो इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आ सकते हैं इंडियन सिस्टम मेडिसिन को यूज़ करते हुए। तो ये आयुष वीज़ा जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए होगा जो कि खासकर इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का यूज़ करते हुए, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा या ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थेरेपेटिक केयर या वेलनेस के लिए। तो एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वीज़ा मैनुअल में, चैप्टर 11 ने। और कंट्री हमारी गवर्नमेंट जो है कंट्री को एक रोड मैप देना चाहती है कि हम हील इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करें। हील इन इंडिया में क्या होता है कि एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पूरी दुनिया को हम इंडिया में, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू। उसी के लिए जो है ये उसको प्रमोट करने के लिए ये वीज़ा सिस्टम भी लाया जा रहा है। ठीक है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है। 2003 में इस एक्रोनिम को डिवाइस किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूनर कोडेक्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्ट मटेरियल जो कि ह्यूमंस ने बनाया है उसको लूनर सरफेस पर लेकर जाया जा रहा है। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है लूनर कोडेक्स प्रोग्राम। तो ये एक आर्ट है जो कई आर्टिस्ट से गैदर किया गया है और ये लूनर सरफेस पर लेकर जाया जाएगा और वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, ताकि लूनर सरफेस पे ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाए। ताकि चाहे कितनी भी वॉर्स हो जाएँ, पैंडेमिक्स हो जाएँ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, एक मार्क ह्यूमन जो है आर्ट का वो मून पर रहेगा। ये प्रोग्राम सैमुअल पेरेल्टा जो है कि एक सेमी रिटायर्ड फिजिसिस्ट हैं और आर्ट कलेक्टर हैं कनाडा के, उन्होंने जो है स्पेयरहेड किया है। और ये आर्ट जो है ये डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में होगा, मेमोरी कार्ड्स में जो है या लेज़र में जो है इसको स्टोर करके नैनोफिच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला ऐसा कैप्सूल जो है वो ओरियन कलेक्शन नाम का, उसको ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर जो है वो छोड़ दिया गया था नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के साथ। अब जो है नेक्स्ट जो है वो आने वाले टाइम पर जाएगा और कहा जा रहा है कि वो एक क्रेटर जो है साउथ पोल का, मून का, वहाँ पर इसको जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लंपी स्किन डिसीज़। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
एक डिवीज़न बेंच ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो है अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखाया है कि जो है लंपी स्किन डिसीज़ को जो है जो कैटल में हो रही थी उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिविटी नहीं दिखाई है। ठीक है, तो ये लंपी स्किन डिसीज़ है क्या? ये एक एक्यूट क्रॉनिक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है जो कि कैटल को अफेक्ट करती है। ये कोई जूनोटिक वायरस तो नहीं है, मतलब कि ह्यूमंस में तो नहीं आ सकता ये, लेकिन कैटल को अफेक्ट करता है ऑफ कोर्स। उसमें क्या होता है कि क्यूटनस और सब क्यूटनस नोड्यूल्स जो है वो बॉडी में बनने लग जाते हैं कैटल के, जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर भी हो सकते हैं। और ये इन्फेक्टेड कैटल के बॉडी पर दिखने लगेंगे, और ये धीरे धीरे अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके ऊपर स्कैब्स आने लग जाते हैं। जब ये होने लगता है तो हाई फीवर, मिल्क यील्ड ड्रॉप होने लगेगा कैटल में, आइज़ और जो है नोज़ से डिस्चार्ज होगा, बेसिकली वही आपके जो भी वायरल सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ब्लड फीडिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लाइज, मस्किटोज या टिक्स, उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है, और ये अफेक्टेड एनिमल्स की मूवमेंट से भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका कोई डायरेक्ट तो नहीं है, बट आपको याद होगा लंपी वैक प्रो नाम से इंडियन गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। तो जनरली वैक्सीन्स का ही यूज़ किया जाता है, हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है वो। ये डिसीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पूरे कैटल को जो है ये अफेक्ट कर रही है, तो उससे इकोनॉमिक जो डेयरी प्रोडक्शन में जो है वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GMP for pharmaceutical industry. This topic is important for your governance section. So government has given a deadline for mandatory implementation of good manufacturing practices in Indian pharmaceutical industries. So what is good manufacturing practices? It is basically a set of quality management and regulatory guidelines which are designed to ensure that there is consistent production of safe, high quality products, especially in industries like pharmaceuticals, food and beverages, cosmetics, etc., where of course product quality and safety is very important. So GMP were revised in 2018 so that we can bring them on par with World Health Organization standards. And but there was many reports at even at that time that Indian pharmaceutical companies were not following the due diligence, and that's why contaminated drugs were flooding the international market and causing distress worldwide. So this was of course brought a bad name for India. So you know that Indian pharmaceutical industry is growing at a very fast pace, and we have a prominent role in global pharmaceutical industry. So India already ranks third worldwide for production by volume and 14th by value. India is also the largest provider of generic medicines globally, and India is also the leading vaccine manufacturer globally. We have about 60% of the world's vaccines which come from India only. And if we look at the industry scenario in India, then 100% of FDI is allowed in for under automatic route for greenfield pharmaceuticals, and 74% is allowed under the automatic route for brownfield pharmaceuticals. But of course, 100% is allowed because 26%, the rest of the shareholding, can be approved by the government. Okay, so Indian pharmaceutical industry is currently valued at about 50 billion, and it is expected to reach about 65 billion by 2024 and 120 billion by 2030. India supplies over 50% of Africa's requirement for generics, 40% of generic demand in the US, and 25% of all medicine demand in the UK. And our government is also supporting the pharmaceutical industry through schemes like PLI. Okay, so then what has the government said? So government has said if you are a pharma company and you have a turnover of over 250 crore rupees, then you have to implement these guidelines within 6 months. If you are a medium and small scale enterprise, then you have to implement these guidelines within 1 year. So there is an introduction of a GMP related computerized system which would design which would be designed in such a way that it would automatically record all the steps followed and checks done, and it will ensure that all the processes are followed. Okay, it will also carry out stability studies as per the climate conditions, and it will keep the drugs in a stability chamber. The pharma companies will have to keep the drugs in a stability chamber so that all kinds of temperature and humidity studies can be performed on that drug to see uh, what impact does it have on that drug. Okay, otherwise if we are exporting our products to a market where there is too much high
humidity, or let's suppose that we are exporting our products to a place where there is very low temperature, then the drug should not cause any reaction to the person who is consuming it. Okay, so for that, stability studies would be conducted in that stability chamber. Also, you know that already the exporting pharmaceutical companies are already following the WHO GMP certified guidelines, but now after these guidelines, the domestic companies who are catering to the needs of domestic market in India will be granted permission only if they meet the requirements listed under the Schedule M of the Drugs and Cosmetics Act. So this step is significant because currently about 2000 of the 10,500 manufacturing units in the country are complying with the global WHO GMP standards, but now after these guidelines all will have to do that. Okay, recently a risk-based inspection was conducted in 162 manufacturing units, and 14 of such units were found to be having several deficiencies, including the absence of testing of raw materials. So 11 specific changes in the manufacturing process on the ground were suggested to them. Okay, so it is important because it harms the image of Indian pharmacy, and we are facing a credibility crisis, especially since October 2022, when we saw deaths of dozens of children in Gambia and Uzbekistan due to contaminated cough syrups which were manufactured by Indian drug makers. So the next topic is sovereign credit rating. This topic is important for your economy section. So global credit rating agency Fitch has recently downgraded US sovereign rating from AAA to AA plus. So what is a credit rating? So if we look at the credit rating of a borrower, let's suppose you are a borrower, then it is basically an assessment of the credit worthiness of your borrowing capacity, that you would be able to return the money that you have borrowed or not. Okay, so now imagine this at the level of governments. So that's why we when we analyze uh, the credit worthiness of a government, we call it sovereign credit rating. Okay, so what are these sovereign credit ratings? So basically it's an independent assessment of the credit worthiness of a country or a sovereign entity. And you know that governments borrow huge funds by issuing debt instruments like government bonds. So that's why creditworthiness here means the ability of the government to pay back its debt without default. So, sovereign credit ratings can give investors insights into the level of risks which are associated with investing in the debt instruments. Okay, so Standards and Poor's, Moody's, and Fitch ratings. These are some credit rating agencies which give credit rating to the governments. Okay, so why is it important? Because we know that obtaining a good credit rating is important for a country because these days almost all countries want to access to funding for development projects in the from the and they want this finance from international bond market. So countries which are having a good credit rating, they would be able to attract more foreign direct investment. Also, if you are having a good credit rating, even if you uh, assume it at your own level, then everyone would be willing to give you money or give you credit because they know that there is very less risk. That's why they would not charge you very high interest. As opposed to that, if you are having a very bad credit rating, then borrowers would be not the lenders would not be very keen to lend you money. And even if they have to lend you money, they would charge exorbitant interest rates. Okay, so that's why it influences the country's borrowing costs also. Okay, so the next topic is Masi portal. This topic is important for your social issues. Recently, Minister of Women and Child Development has informed the Rajya Sabha about Masi portal. And this Masi portal means monitoring app for seamless inspection, and it was developed for synchronous monitoring of the child care institutions and their inspection mechanisms across the country. NCPCR has developed this app, and this is basically a single platform for inspection of all the child care institutions which have been established under the Juvenile Justice Act, and be it uh, the state inspection committees, district inspection committees, or child welfare committees, all would be able to access this app and inspect the CCIs at any time. Okay, so what is NCPCR? It's a statutory body which has been formed by under the Commission for Protection of Child Rights Act, and it is functioning under the Ministry of Women and Child Development. It says that all the laws and policies in the country are in consonance with the rights of children. And apart from the uh, Commission for Protection of Child Rights Act, it also has the responsibility to oversee the regulation of POXO Act and the Right to Education Act.
So the next topic is Ayush visa. This topic is important for your governance section and also your international relations. So you know that Ministry of Home Affairs has recently notified the creation of a new category of Ayush visa for foreign nationals, so that they can get treatment under the Ayush systems or Indian systems of medicine. So what is this Ayush visa? It has been specifically designed for foreign nationals who are looking to receive medical treatment in India through traditional Indian systems of medicine, and this visa aims to cater to those interested in Ayurveda, yoga, and other traditional forms of therapeutic care and wellness. And for that, a new chapter has been introduced in the visa manual, and we want to promote Heal in India initiative through these initiatives, or through this small efforts like introducing a new Ayush visa. Then what is Heal India initiative? Heal in India basically seeks to provide integrated and holistic treatment to the world in India, and enhance patient mobility so that they can access affordable and quality healthcare services, especially from traditional Indian systems of medicine. So you know already that Ayush means Ayurveda, Yoga, Unani, Naturopathy, Siddha, Homeopathy, and it's an acronym which was devised in 2003. So the next topic is Lunar Codex. This topic is important for your science and tech section. So a collection of various arts made by humans might become immortal soon with the Lunar Codex program, which aims to put this art on the lunar surface, and this will be a collection of art gathered from artists, and this will be stranded on the lunar surface as a lasting record of human creativity. So, and this project has been spearheaded by Samuel Peralta, who is a semi-retired physicist and art collector from Canada. And this art would be collected in digitized format. Okay, it will be stored in memory cards or microfiche, uh, film-based microfiche, and this would be stored on lunar surface. First such capsule has already been left, and it has already reached the moon, and it was known as the Orion collection. And the next one, of course, would go soon, and it might reach the moon's south pole this time. Okay, so the next topic is lumpy skin disease. This topic is important for your environment section. So a division bench of the Telangana High Court has recently expressed its dissatisfaction with the lack of specific details about measures which have been taken to control the outbreak of lumpy skin disease in cattle. And what is lumpy skin disease? It's an acute to chronic, highly infectious viral disease which affects cattle, and it is caused by the lumpy skin disease virus. Of course, it is not a zoonotic virus, which means that it cannot be spread to humans, but of course, it affects our cattle, and once this virus gets contacted with the infected animal, then cutaneous nodules start appearing, which are about 2 to 5 centimeter in diameter. They appear on the infected cattle's head, neck, limbs, udder, genitalia, and even perineum, and they later turn into ulcers, and they can eventually develop these can eventually develop into scabs over the skin. So when the virus gets contracted, then high fever develops, sharp drop in milk yield is witnessed, discharge from eyes and nose is witnessed. So basically, although all the viral disease symptoms are visible, so it generally gets transmitted through the blood feeding insects like flies and mosquitoes or even ticks, and it can also transform from animal to animal through movement of affected animals. Currently, there is no direct antiviral treatment, but of course, like in India, we have developed our indigenous vaccine, Lumpy Provac, and these vaccines are used to control this disease transmission. This disease is also very important in case of in of course in economic sense, because it directly impacts our livestock industry. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.